Assalamu alaikum, everyone. We are back again with another episode of Drama Log. Today, we're going to be reviewing Farar. It's a new drama that just started on Green Channel. I don't know if you guys know, Green Channel is a relatively new channel that started last year, and it promises to bring new content, new and progressive content for us. And I'm joined by Sunny from Drama Log, and as well as Faraz from Drama Pakistani. So, assalamu alaikum, guys. How's it going? Hello, everyone. So far, so good. Hi. Hello. So we're reviewing Farar today. Nice. So Farar is a new drama that just started on Green Channel. It airs every Monday, right? Monday, I believe. And it's written by Mustafa Afridi, directed by Sayyid Wajahat Hussain and Musaddiq Malik. And cast includes Hamza Ali Abbasi, our AAA, who is Ahmad Ali Akbar, and Sohai Ali Abru, Faris Shafi, Nurul Hassan, our very own Danny Z, Harun Shahid, Mamia, Mira Bali, and Salman Zaid. So do you guys want to go ahead and start with this? What do you guys think of the drama? What a cast. So Musaddiq Malik, right? You mentioned as a director. So we just saw his Noor-e-Jahan, and I think it was a well-directed show. So I'm interested now. I'm really intrigued. In terms of Farar, I think it had a fantastic opening. The first episode was really very strong. Right, I know Faraz wants to talk about it. The first opening scene. Go ahead, Faraz. हाँ जी, आवाज आ रही मेरी आप सबको? Perfect. Okay, good हो गया. Hi everyone. थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी. I was इसे कहते हैं एक चीज से पंगा कर रहा था मैं. I was checking this mic मैनुअली, तो इसलिए आवाज कभी आ रही थी जा रही थी. Anyway, coming back to फरार. भाई मुझे तो ये ड्रामा 2-3 रीजंस की वजह से अच्छा लगा है. बहुत जबरदस्त. मतलब पहली एपिसोड अगर किसी ड्रामे की इतनी धमाकेदार है. इससे पहले जो बहुत पहले मैंने एक ड्रामा देखा था बशर मोमिन, फैसल कुरैशी का. उसकी पहली एपिसोड ने वो एक जिसे कहते हैं ना एक एक्साइटमेंट पैदा की थी जो कि फरार ने पैदा की है. और इसमें हम लोग सीन वाइज हम लोग आपस में जैसे हम तीनों डिस्कस करते हैं कि ये सीन हमें पर्टिकुलरली अच्छा लगा. तो हमारा जो पहला सीन है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जब अहमद अली अकबर की एंट्री होती है, और मेरे हिसाब से एक बड़ी जबरदस्त और धमाकेदार किस्म की एंट्री उन्होंने की. ही इज वेरी अनलाइक द कॉप दैट ही इज प्लेइंग इन नादान. इन नादान ही इज रिस्ट्रेंट, आहिस्ता बात करते हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, सोचते ज्यादा है. इसमें तो वो ऑलरेडी सस्पेंडेड है और उनको अगेन वही कराची वाली एक फ्लेवर जो इस ड्रामे में उन्होंने दिया है स्टार्टिंग से ही, जिसके बारे में मैं आपको एक और मजे का ट्रिविया दूंगा आगे जाके. बट कराची का जो फ्लेवर उन्होंने दिया है, जिस तरह से कराची दिखा रहे हैं, आई थिंक कभी मैं कभी तुम के बाद ये दूसरा ड्रामा है जो कि कराची का फ्लेवर ज्यादा एक्सपोज कर रहा है, दिखा रहा है. तो वो मोबाइल स्नैचर्स आ जाते हैं एंड द वे ही ग्रैब्स देम, यू कैन डेफिनेटली सी कि यार ये बंदा जो है ना, ही मीन्स बिजनेस. सस्पेंडेड है, क्यों सस्पेंडेड है? अपनी हरकतों की वजह से होगा सस्पेंडेड, मे बी इज टू अपराइट, बट that's Farar for you, and I think that was a wonderful entry from me, at least, for Ahmed Ali Akbar. Over to you guys. Definitely. Go ahead, Sunny. You go ahead. I wanted to kind of echo the same emotions about Ahmed Ali Akbar. I saw the stark contrast with the cop that is playing in Nadan as well as the cop that is playing here. In Nadan, he's a little hunched. He's a little, you can see he's a little subdued. Here, he seems unhinged, and he's like, he is very strong. His physique is looking better actually. So he's much buff than he is in Nadan. So very promising first scene. So it's my turn now. So basically, I guess we can start off with who's playing who. We've got Ahmad Ali Akbar, who's playing Fasi, right? Which is, my husband's name is Fasi. FYI. तो आपकी तो इनिशियल एसोसिएशन ही हो गई इनके साथ, जबरदस्त. So and then Hamza is playing Batish. बातिश नहीं, अच्छा बातिश. ओके, बातिश मतलब वो बातिश कह रहे होते हैं, बातिश भाई. अच्छा, बातिश ने बातिश भाई, द वे दे आर सेइंग इन द ड्रामा. ठीक है. ओके, एंड देन मामिया इज प्लेइंग सादिया. क्यूट सी लड़की मोहल्ले वाली. एंड देन हु इज बबरीक.
That's Danny Z. Acha, okay. And Nazish? We don't know yet. Probably not. नाजिश गालिबन वो ये सुहाई अली बड़ो जिसको मार पड़ी थी. Acha. अगेन उस सीन पे बात करेंगे तो हाँ. ठीक है. So for me, the opening scene was amazing. Like you guys said, it does not seem like the same person, to be honest. It's not the same Ahmed Ali Akbar. I had a few questions. He had a gun. If you're suspended, do you still get to keep the gun? I'm not sure how it is in Pakistan. Here, if you're suspended, you have to give up your gun. So I wasn't sure why he That's had a gun a on him. very good observation. That's a very good observation. सना मैंने भी ये नोट किया था और फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान है चलता है यहाँ पे सब चलता है. Otherwise, while you're suspended, you have to. You cannot use the gun, right? Yeah. I know. You cannot. But चल रहा है भाई, Okay. self defense कर रहा है, चलता है सब इस मुल्क में, शहर में. I mean, शहर में बच्चे के पास गन होती है आजकल. अच्छा really? अच्छा यहाँ भी होती है हाँ, लेकिन हाँ. I mean, यहाँ भी होती है सबके पास. What do you call it? Cinematic liberty? Cinematic liberty. Cinematic liberty, yes. Dramatic liberty कह सकते हैं क्योंकि ड्रामा है. Yeah. But वो सही dialogue था ना. He says like तुम्हारा तो खिलौना है मेरा असली है. हाँ, नहीं वो डायलॉग भी अच्छे हैं इसके. उनका बहुत टॉय सही अच्छा dialogue. होता है. उनका पानी टॉय वाली का ही गन होता है थी. क्या? पानी या वो जो याद नहीं है बचपन में हम देखते थे गुब्बारे मारने वाली गन होती थी, फाड़ने वाली एक गन आती थी पठान की, उसी तरह की कोई गुब्बारे फाड़ने वाली गन होती है उनके पास. So yeah, his entry was really good. Go ahead, Sana. Acha. You know, for me, my favorite scene was actually Hamza Ali Abbasi's scene, the one where he's sitting, where he's with the shopkeeper, and and the Chacha whole do pan. conversation. हाँ. हाँ, बस पान वो वाला. सीन मेरे लिए अच्छा था. बाकी it was very gruesome for me. I had to skip a lot of the scenes. मैंने देखे ही नहीं. I had to skip them. So That's yeah, it triggering was for a you, disclaimer, a disclaimer out there, trigger warning. It was too gruesome for me. I could not watch that one. Jo Safai wala scene tha. I had to skip it. And then the other one that I skipped was Jesse wo drill nikalta hai. I had to skip it. That's it. I was done. Oh, by the way, I could not take it. I don't even Suhai know what wale happened. scene में was it Nadia Jamil? Nadia हाँ Jamil. जी, Oh my हाँ जी, God. नादिया जमीन. Oh my God, Yes. she's like the most opposite person of that. I know. What she's Look playing. Oh at the cast. man, that's the I mean, she's like acting the power, most- huh? She's like the exact opposite. I was like, it looks like Nadia Jamil, but I can't even imagine her being this cruel and gruesome. No, and then I had Shock to skip value it. कैसी मुझे नहीं थी? पता क्या हुआ. बहुत सही, बहुत. Oh So my what God. happens in that scene exactly? So are we going to talk about this scene first and then the Batish entry या Batish पान वाला scene क्या हम क्या करेंगे? You guys tell me. What was the order? I think Batish came first, right? बातिश हाँ बातिश की एंट्री थी. बातिश, हाँ. सनी आप शुरू करें बातिश की एंट्री से. To be honest, it looked really good. Like the shot, the aerial shot that they had with the him biking down to the pawn shop, that was really nice. And then when he steps down and he approaches the person, really good. I actually quite liked Hamza Ali Abbasi. His presence was very commanding. And his slight changes in expression when he sees a girl pass by and to the next scene where he's up for revenge. Such a beautiful performance. To me, the scene started very nicely. With the pan person teasing him, the pan vendor teasing him, but I thought the scene was really long. Was it really needed? Like he kept on and on and on, and then you have to send the rishta, koi leke chala jayega. That was a very long scene. It would have made sense if there was some real comedic punches in that scene, but that wasn't there. So I was like, yeah, okay, why is it taking so long? Get to the point, right? That was my take on that scene. So आई थिंक इसमें ज्यादा जो मजे की चीज थी ना वो एक आई थिंक इसको हम इस तरह से क्योंकि हम लोग तो देखो ट्रेलर भी देखते रहते तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर आर्क क्या है या ये किस तरह का बंदा होगा तो हमें पता था. लेकिन जो लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा या जिन्होंने अभी हमारी शायद पॉडकास्ट है जिनको अंदाजा हो रहा होगा कि ड्रामा आया फरार, तो उसमें जो है ना वो उसका डिमीनर दिखाया हुआ है कि वो पान वाला उसको हल्का ले रहा है और वो कह रहा है कि तुम शरीफ घर के लगते हो, ये हरकतें मत किया करो, ये ओछी हरकतें मत करो, रोज एक महीने से आ रहे हो, लड़की को देखते हो कि ही इज ट्राइंग टू बी द नाइस गाय. एंड बातिश इज समवन, एक तो नाम मैं और सनी डिस्कस कर रहे थे कि नाम बड़ा चुन के लाए हैं बातिश, और हमने थोड़ी सी इसके नाम की थोड़ी सी हमने एक मीनिंग निकाली थी. आज ये काम मैं कर रहा हूँ, आमतौर पे सना करती हैं. तो बातिश बेसिकली मीन्स सम गुस्से वाला.
sakht mizaj, someone who is really who gets angry easily, and when he gets angry he does menace. तो शायद इसी रेफरेंस में, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम इन्होंने बातिश रखा है. और मतलब वो चचा उसको समझा रहे हैं, बेटा इतने सारे लोग हैं, तुम क्या हो जाएगा. और इसी सीन की वजह से वो फिर हम अगला सीन है जिसपे हम बात कर सकते हैं कि जब वो आता है जहाँ पे स्नोकर खेलने जाता है और बातिश भाई आते हैं. अब आप लोग जिस भी ऑर्डर में बात करना चाहें, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लाइट बैक स्टोरी ऑफ दिस एंटायर एपिसोड सीन एंड इंस्पिरेशन क्या है इनकी, इन लड़कों की इंस्पिरेशन क्या है, ये कहाँ से आए हैं. तो इफ यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट सम अदर सीन आप कर लें, फिर मैं वो जो टेलीफोन कॉल आई थी ना, जो पार्टी का हेड कॉल कर रहा होता है, मैं उसका भी रेफरेंस आपको दूंगा जरा. Okay. Okay. So for me, I disagree with Sunny because for me that was the best scene of the whole. You know, कौन सा वाला? ये shopkeeper वाला, अच्छा, पान वाला. अच्छा. That was my favorite scene because I think Sunny said that she fell asleep in Ishq Junoon. I think she fell asleep in one of the dramas. Yeah, I fell asleep in this one. Karze Jaan, in the first round I fell asleep. But I fell asleep in this drama. Seriously, I thought like the jo hai Sawabi, I think they were in Sawabi Babrik, I don't know what his name is. The wo wala scene Sawabi, in, I think they said Sawabi hai na area. सवाबी एरिया है. उन्होंने they have shown 3 different cities and all हाँ, these तो things वो है actually Sawabi in connect. KPK. Yes, there is. अच्छा ठीक है. So for me this was the best scene because it was comedic. It was मैंने trailer I think only once देखा है, only one time. So I wasn't even sure कि इसका क्या role होगा हमजा का. But I liked the whole thing that the shopkeeper says about the girl कि वो आती है तुम देखते हो, and like Hamza's expressions are really good. I've never watched Hamza in a drama ever. This is the first time I'm watching him on अलिफ screen. नहीं देखा me आपने? neither. सना? नहीं, I have not watched Alif. I have not watched Jani Jahan. I haven't watched I the have other not one watched जो जाने है जहान. with I Aiza के haven't. साथ एक और था. I think it's debut drama. मौला जट देखी है आपने? नहीं. Guys, you should watch मौला जट यार. So and what's You his should have debut watched. drama with Aiza? I cannot even remember. प्यारे अफजल. हाँ, वो भी नहीं देखी मैंने. So this is my first time watching him on screen. And he was Oh. really good. You like Yeah. his screen presence? I liked it. Yes, he's I good. liked it, yeah. He's really good. Parts of Man Mayal. It's Man Mayal, right? Where he's with Mayali. मन मायल आयशा खान और Yeah, माया अली गालिबन और ये. He was really nice. He was really good there. So I kind of spotted him in that show. And He's then actually become better looking. Oh, is it? Yeah. I thought he fits the bill with his looks and his ruggedness. Yes, And all. He fits the rugged. bill. Yeah, he's very rough and tough, huh? Very rough and tough, and he's styled correctly as well. So With that plaid shirt. yeah, exactly. So guys, there is. I'm going to recommend Sana and Sunny and all of you as well who haven't watched it. For Hamza Ali Abbasi, you should watch. एक तो पाकिस्तानी मूवी थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी, उसमें हमजा अली अब्बासी पहली बार आए थे and he was everybody could notice him कि हाँ यार कोई बंदा आया है जिसको एक्टिंग आती है अच्छी. So his role was meeting मैं हूँ शाहिद अफरीदी, but that was way back in 2014, 2013 या 14. देन हमजा अली अब्बासी की आप एक और जो रिकमेंडेशंस मैं दे रहा हूँ, मैं हूँ शाहिद अफरीदी आप देख सकते हैं, आप फिर हमजा अली अब्बासी की मूवी मौला जट देख सकते हैं, and you guys can also watch, and you should watch, and everyone should watch. I am going to tell you this, and when I say this in high confidence. You should watch Alif. मैं इसको इस तरह से बताऊंगा आपको कि there are dramas that are good, then there are dramas that are super duper good, blockbuster good, like कभी मैं कभी तुम and और हमसफर, and then you have a drama that's Alif. That's for me, nothing can top Alif. For me, it's very special. So if you guys haven't watched Alif of Hamza Ali Abbasi, you should watch, because उसमें Hamza Ali Abbasi की acting तो थी, but that story by Umair Ahmed, the direction, the way it elevates you in Alif. If you haven't watched it, watch Alif. So yeah, go ahead, guys. Okay, gotcha. So yeah, that's and like I said, it was gruesome for me. Is it going to continue to be this gruesome, the drama? So you guys want the backstory now? Sure, go ahead. Okay, so this is where it made
me excited, and this is where it's going to make it exciting for the people, especially the people in Karachi. So if you guys know, there was a political party by the name of MQM, मुत्तहिदा कौमी, पहले महाजिर कौमी It मूवमेंट still नाम था है. उसका, It's still there. अभी भी है, अब तो लल्लू पंजू हो गई, अब तो सब अच्छा. बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी है. But there was this party, there is still this party called MQM, and if you are a 90s kid, and if you have lived your 90s and in Karachi, जितनी दहशत और जितना टेरर इस पार्टी के पास से होता था, पॉलिटिकल रीजन में मैं नहीं जा रहा, हमारे यहाँ जबान की बुनियाद पे पार्टीज बनती हैं, सिंधीज हैं तो पीपल्स पार्टी है, पंजाबी हैं तो मुस्लिम लीग नून करके है, और कराची की जो रिप्रेजेंटेशन थी, अगेन पॉलिटिक्स में नहीं जाते, बट देयर इज अ पार्टी कॉल्ड MQM. The scene is कि जो उस पार्टी के हेड हैं, he went into exile and he is in London right now. Or he's banned from his live speeches, but there was a time in 95, 96 or 97 when the party head would address the nation through a telephone call. So guys, back then when there was no Skype, when there was no Zoom, when there was no voice over IP or calling from the internet, this guy ran this party by sitting in London, and his name is Altaf Hussain. So Namoos Saab, the guy who's playing Mahmood Aslam, he's apparently playing that role. So I was in two minds कि क्या ये he's playing Altaf Hussain and he's playing that party. That party, उफ, जिस तरह का टेरर उन्होंने मचाया था कराची में, और जो 90s के लड़के, मैं तो बच्चा ही था और फिर लड़का होगा 90s में, अर्ली 2000, हम जो बड़े हुए हैं, पार्टी में एक दूसरे को हम साथी भाई कहते थे, और पार्टी के ऑफिस होता है, उसको आप सेक्टर कहते हैं या यूनिट कहते हैं, फिर सेक्टर होता है, फिर राब्ता, इस तरह की चीजें होती हैं. इट्स एन ऑर्गेनाइज पार्टी. तो ये जो टेरर आप सना ने मेंशन किया कि वो ड्रिल मशीन लेके आता है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडी. इफ दे वुड वांट टू टॉर्चर समवन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन रियल, बोरी बनलाशें, you would kill an opposite parties or rebel parties worker, put him in a sack and just throw it on the road. So there was this famous thing कि बोरी में लाश, मतलब आप नाप बताओ, बोरी हम बनवाते हैं. You can even go online and YouTube, search for Altaf Hussain saying the word bori, and he will say, Wow. on live he's giving the dhamki कि बेटा नाप बताओ, बोरी मैं बनवा दूंगा तुम्हारी. Wow. Oh my God. So there was a time when TV channels wouldn't talk about MQM. There was a time when the entire country would be scared of MQM. Yeah, I know In fact, about MQM. I know about them, and I know about Altaf कितनी Hussain. I दहशत know. थी, दहशत Yes, कितनी and I थी. know that his brother lives in Houston. अल्ताफ खान का Altaf भाई Hussain. तो हाँ, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है. No. He's not even into सिर्फ politics. He's not even into हाँ. politics, I think. नहीं, MQM के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो ह्यूस्टन टेक्सास ही हैं, तो जो ह्यूस्टन में रहते हैं वो जानते हैं. अब मैं बता तो रहा मैंने हूँ सही कहा था, फिर मैंने सही कहा था स्नेक का. यार, छोड़, वो आपकी बात पे लोगों ने एतराज किया है, ह्यूस्टन वालों ने, कि हम स्नेक नहीं है, तो अल्फाज वापस आपने तो नहीं लिए. और मैं भी ह्यूस्टन में पढ़ा हुआ हूँ, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, तो मैं भी स्नेक नहीं हूँ. शिकागो वाले सबसे अच्छे. शिकागो, अब मैं क्या बोलूं यार सनी, देयर इज दिस फाइट बिटवीन देसी कम्युनिटी ऑफ शिकागो एंड ईस्टर्न. शिकागो में ना, शिकागो में हमारा एक दोस्त था, वो हम उसको कहते थे पान वाला, वो मुंह में पान डाल के बात करता था. तो कहते थे शिकागो का ऐसे ही होते हैं, जा निकल यहाँ से, शिकागो का मेला यहाँ से. Anyway, so या हम बोलते थे उसको कि अबे जावे जा, शिकागो का मेला आ गया तू. तो हाँ, मेला is also apparently a slang that we people use in Karachi. So मेला, okay. मेला like dirty. Oh, मेले ही इधर. And it's not something कि हम किसी को उसमें कह रहे हैं, हम ऐसी जनरलाइज करते हैं. मेलापन मत दिखाओ, ये मैली हरकतें मत करो तुम, मेले. Like गंदी हरकत ना करो. Yeah, even in your worst, Urdu is so good. Who's mine? Like Pakistan वालों की. Yeah, even at your worst, you sound refined. ये कराची वालों का खासा रहा है उर्दू तो. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फिर कराची की तारीफें बयान करना शुरू हो जाऊंगा, बट जो एक टाइम था कि अभी आप पंजाब में कभी जाएं तो पीपल वुड रियली एडमायर
those who used to live in Karachi. हमारे बात करने का तरीका, सलीका, तमीज, ये सब वो एडमायर करते थे पंजाब वाले. और अभी भी back to the same Farrar and the reference and all that party's terror was so much कि जब हम कराची के लोग जाते थे ना लाहौर में, तो हमसे लोग बकायदा हमसे पूछते थे, यार आप कराची में रहते हो, यार आप कैसे रह लेते हो यार, वहां तो बंदा गोली मारता है, बात ही नहीं करता. एंड वी वुड आल्सो लाइक टू प्ले अलोंग. हाँ भाई तुम मत आना, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है इधर, यहीं रहो तुम आराम से, मत आना भाई, मैं खुद जानता हूँ इसको, हाँ मैं खुद पार्टी में था, मैं खुद साथी हूँ, इस तरह ये बातें ना. So yeah, so that party, like again, the question is, was Sana case, Sana was asking, was it this gruesome? Sana, it was more than this. Yeah, It was more than sad. this. But that was So a मेरे लिए तो बड़े मजे का था. good context that you said, like we now get a better picture of where this drama is coming from. नहीं, people from Karachi, I would understand, especially guys, they would know, they would see this. Right. कि हाँ यार ये उस पार्टी का रेफरेंस है. पहले मुझे हुआ जब उनका फोन कॉल लगी हुई थी, हेलो ऐसे करके बोल. और दूसरा जब वो ड्रिल मशीन लेके आ जाता है जब वो, Oh my God, man! मैंने कहा is he gonna like just drill him, the guy, just for just for that? डराते ज्यादा थे, लेकिन कभी कर भी देते थे. करते नहीं थे, like just Hamza do it to the man. यार he doesn't do it, but डराते तो obviously डराते थे. और उनका एक टेरर होता था साथी भाइयों का ना, टेरर था ये, राब्ता कमेटी का इंचार्ज, सेक्टर ऑफिस, सेक्टर इंचार्ज. So Hamza is part of this group then. Hamza, I don't know, maybe he's the in charge, because उसको apparently उसका रोल बड़ा उसको ना बातिश भाई आ जाएंगे, बातिश भाई आ गए. He is a part of some group because remember then when one of the he's a Karkun. I'll tell you the hierarchy. I'll tell you the hierarchy of that organization if they are representing that. So in the hierarchy, it's one person who is the sector in charge, and then under sector in charge you have different units, and then you have a unit in charge. So जो यूनिट इंचार्ज होता है उसकी इज्जत होती है अपने इलाके में, उससे सब डरते हैं. यूनिट इंचार्ज से ऊपर होता है सेक्टर इंचार्ज, उसकी भी बड़ी इज्जत होती है. फिर पार्टी में होते हैं शूटर्स, जो शूटर होते हैं उनकी अलग इज्जत होती है. तो आई एम गेसिंग दैट मे बी ही इज अ यूनिट इंचार्ज और अ सेक्टर इंचार्ज और मे बी अ शूटर. ही इज अ शूटर. तो ये सारे काम वो करते थे, तो उसकी इज्जत बड़ी, उसका चलता है पार्टी में. ठीक. Oh, and then I noticed Salman Saeed. He is Humayun Saeed's brother. Who's so that? The one with the drill? He's the one. He's the one with Hamza. Hamza's right hand man. Oh, right? The one with the drill. Chamcha. Okay. Okay. वो है. And then I noticed Harun Shahid. इस एपिसोड में तो नहीं दिखा हमें ना, अगली में आए शायद. Harun Shahid was there with Danny Z. Oh, अच्छा, वो डैनी जी के साथ. हाँ, वही था ना? Wasn't that Harun Shahid? I don't know if it was Harun Shahid. Harun Shahid was there with Danny Z. I don't know, but the brother or the other guy. Was it the brother or whoever who was telling Danny Z, come on and apologize? That guy? No. The one who he was fighting against. No, fighting against तो वो नहीं था. Fighting against वो भी बड़ा funny scene था. Was he doing it? Was he doing it on purpose or was he really gay? I think it was I don't know. I think it was teasing him. भाई. Danny Z's entrance is so funny. It's a real fact. पठान लोगों को पसंद नहीं है ये हरकतें. वो पठान बना है ना, पठानों में ये बड़ा होता है. They take it really serious कि लड़के ने मुझे आंख मारी, वो गुस्सा करता है, कहता है हमने हारने पे नहीं इसको मारा, इसने हमारे को आंख मारा है, इसलिए हमने इसको मारा है. और उसके बाद वो जरा इनअप्रोप्रिएट तरीके से उसको हक भी करता है. तो he's more like ये he's a guy and he's hitting on me. और पठानों में अब मैं क्या बोलूं, पठानों के बारे में मशहूर है, they are more into men than they are into girls. Is it? Oh my God! So like stereotyping, huh? हाँ, stereotyping हो गई पठान. Oh man! I cannot say more. मैं ज्यादा नहीं बता सकता. But it was so funny though. It was funny. हाँ. It was very funny. Yeah, very funny. वो बेचारा इतना like पीटा हुआ है, वो किसी तरह उतरता है हग करने के लिए, and then I thought he was doing it on like सच्ची में. वो सच्ची में हाथ फेरता उसको. वो तो I thought he's interested in him. हाँ, हो सकता है. पठानों में होता ही है. हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप पठान मतलब खूबसूरत लड़के हैं आप, और अगर आप इस जगहों पे जाते हैं तो मतलब आपको लड़की के बारे में इतनी टेंशन नहीं होने की जरूरत, क्योंकि वो पठान लड़कों को पसंद करते हैं. That's such a stereotype. Oh man, okay. That's funny.
Okay, so yeah, So that's the next scene, what about the next scene we are talking about? Yeah, Danny Z के बारे में बात करनी है हमें. oh, Danny Z is amazing, yeah. He's Yeah, good. I so like him. Yeah, both Sunny and I. Danny Z. Ali Zafar light. Yeah. Ali Zafar को पसंद नहीं है करते हम लोग, but I like Danny Z. I mean, I like Ali Zafar's नहीं वो songs, cute है. but Danny Z is very Danny cute. Z is something else, you know. He's like his personality. Yeah. Is he speaking the dialect correctly? I couldn't हाँ, tell. that was my question for you, Faraz. हाँ, but again वो बिल्कुल ही एकदम exactly तो copy नहीं कर पा रहे वो. अच्छा. See, But and that's my जैसे मैं example, thing. That's my मैं वो example thing देता होता हूँ है आपको. कि लोगों को it's like they should get actors who speak that language so that they can do it correctly. यार मे बी कोई रीजन होगा, मे बी ये ड्रामा जैसे अब डैनी जी जो है ही इज नॉट मतलब सवाबी है, बट मे बी ज्यादातर वो वहां पे ना हो, ही मे बी ही मूव अवे फ्रॉम दैट इन फ्यूचर, तो हमें पता नहीं. बट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर किसी ने इस डायलेक्ट को डिट्टो कॉपी मारा है, तो इफ यू गाइस हैव वॉच्ड दैट ड्रामा खई, उसमें फैसल कुरैशी ने क्या कमाल पठान वाला एक्सेंट मारा है. और मतलब that was something else. So Danny Z should, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है, I'd say 60-65% इन्होंने पकड़ लिया इसको. Like in Kabli Pulao, they have Sabina Farooq, who is Pathan. Right. Yes. So that was amazing. It was so सबीना फारूक की genuine तो क्या and बात है. genuine and authentic. That was good. सबीना फारूक ने एक बिल्कुल एक्यूरेट मारा था. Yeah, because she is Pathan. अच्छा, वो वैसे ही पठान है. Huh. Yeah, she's half Yeah. Pathan. Her mom's Pathan. I mean, she can Oh, okay. speak Pashtun fluently. That's what she Yeah. told me in the interview. Yeah. अच्छा, एनीवे जस्ट अ डिस्क्लेमर कह लो या एक नॉर्मल बात कह लो. इफ देयर एनी पठान्स हु आर लिसनिंग टू अस, यार आई अपोलोजाइज, ये कोई ऐसी बात नहीं कही थी, बट दिस वाज सेड इन अ फन वे कि यू नो पठान होते हैं, देयर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स मैन. दिस वाज जस्ट सेड इन अ फन वे, स्टीरियोटाइप. सो वी डोंट वांट, आई मीन आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग. मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो एक हंसी मजाक में एक हो जाती है चीज, वो कह दी हमने. एनीवे हाँ, तो फिर आगे क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा सीन किस पे बारे में? I would like to talk about the snooker scene. Man, I felt ड्रिल so मशीन वाला. They were cinematic. playing pool now. They were playing pool. Yeah, they were playing pool. Yeah. Oh, acha. You said snooker, so. Oh. स्नोकर कहते हैं बाग, स्नोकर क्लब कहते हैं वैसे तो कराची Oh, में. acha, okay. उसमें आप पूल भी खेल सकते हैं, उसमें आप स्नोकर भी खेल सकते हैं उसी टेबल पे. Okay. Teak. Okay, go ahead. It was such a cinematic scene, right? Like the starting from the guy walking in and setting up the atmosphere, and then the real hero walks in, and then the way he terrorizes them. Oh my God. And the way the people reacted. Somebody fell down unconscious. Somebody tried to flee, and then he gets like, he throws his ball at him to stop him. Oh my God. I thought Hamza was superlative in that scene. Rarely in a TV show have I seen that kind of a cinematic दैट presence. बॉल इज प्रीटी हैवी यार, उसने भेज के मारो तो सर खुल गया होगा उसका. Exactly. But that was intention, right? And then, but ये जो aura थी ना इस scene की, पूरे दुनियापुर में ये aura नहीं दिखी मुझे आज तक. ये maybe Farrar is something that Dunyapur wanted to be. Yes. Like that kind of look that Hamza is not overdoing anything. None of his expressions were like he's overdoing it or anything at any point. But the way he's looking, the way his body language is, it's instilling a terror in you. Like as a viewer, I was a little terrorized for those kids, but Dunyapur में माशाल्लाह बोली जा रहे हैं. कहता बोलो ना, सवाब कमाओ इनको. डायलॉग भी मजे के है ना. बहुत सही थे. बहुत सही था. Oh, beautiful. जी सना, you have to say something about the pool ball. मैं क्या बोलूं? I didn't watch the scene. I skipped it. आएंगे रोमांटिक सीन्स भी आएंगे, सादिया और उसकी भी आएंगे, बोटी सादिया और लेके. बाकी. हाँ, हाँ. there is a twist coming up. अच्छा. But How do you know? that scene was cute. I think Sana probably liked it, where the father and the daughter is singing. Oh yeah, that was really good. When like it तो was, वो जो it was लड़की so है, well picturized and सना, very well educated. सना वो जो लड़की है वो उसी की बेटी है जिसको इनकी पार्टी, बातिश की पार्टी ने धमकी दी होती है कि आर्टिकल्स लिखना बंद करो.
Yeah, professor, right? So he's falling in love with the daughter of the enemy. Twist. Oh, Hmm. ठीक. और नादिया जमील का सीन किसी ने बात करनी है या आप लोग So Nadia what's going on Jamil there? really. Can you tell me what's going on exactly? Because I did not watch it. हाँ सनी would you like to say? From what I understood is like I Nadia Jamil Nadia Jamil's husband was actually having an affair with Suhaya Ali Abro, and I don't know what the background of Suhaya Ali Abro's character is, but this person, Nadia Jamil's husband, was having an affair with her and brought her to this their farmhouse. And Nadia Jamil definitely belongs to some kind of a group from some kind of family, because her brother was sitting behind her, and you see him towards the end of the scene. She definitely belongs to some kind of a family who is into aggressions and things like that. So Nadia Jamil has got this woman tied up, and essentially she's trying to threaten her for carrying out this affair with her husband. And so she's got a team there who's trying out different ways to threaten her. Initially they wanted to burn her hair or shave her off or something like that. Then they got down to the level that okay, we can burn her with acid. But at the whole time, like you could tell that Nadia Jamil can be really evil. It's an evil family that Sohaya Ali Abro's character has gotten into. And then finally, the whole thing was stopped by the brother who gets up and then he says that, you gotta leave. And you gotta leave my brother-in-law, completely. Otherwise, things will not go down well for you. So that's what I understood from that scene. I actually read comments online saying that this scene is inspired by a true story. Oh wow, really? Oh my god. Oh, I guess it could be. I do know about a story, but I don't know if it was. मुझे लगा था कि basically there was a clip of a very influential real estate tycoon. तो उसकी बेटी जो थी ना, शी वॉज आफ्टर, मतलब एक क्लिप है जिसमें वो एक औरत जो है वो एक लड़की है, मॉडल है, शी वही हीरोइन है जो उसमें आई थी जवानी फिर नहीं आनी में, हाँ उसमें आई थी, अहमद अली भट्ट की जो बीवी बनती है. तो इन रियल लाइफ हर नेम इज उजमा और समथिंग. तो उसकी क्लिप है कि ही इज डेटिंग दिस रिच गाय who is the son-in-law of a very influential real estate tycoon in Pakistan. तो जो उसकी मतलब उसकी बीवी उस लड़की को मार रही होती है. ये है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आप लोगों को यूट्यूब पे. तो शायद मे बी इट्स इंस्पायर्ड बाय दैट, मे बी इट कुड बी, बट Could हाँ, be. इट Oh my कुड बी. god. But इट that वाज, scene हाँ. was really terrifying me, and I couldn't believe it was Nadia Jamil doing it. But each and everything that they were like, they were so casually saying, right? कि इसको ये कर देते हैं, वो लेके आओ, छुरी लेके आओ, ये कर दो, and then finally the acid. Oh my god, I was like, oh no. Did they actually do anything or no? No. The brother or whoever that other influential person was, he intervened at the end and said like, I'm in namaz ka time ho raha hai, so I'll have to leave this here. But he gives a final warning to Sohai that you got to leave and you pack your bags and leave right now without even meeting my brother-in-law, or else you'll be in serious trouble. And then हाँ, तो so that he was, saves हाँ. her in a way. But yeah, so we'll know more about Sohai, I guess later on. ठीक, yeah. तो बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू थी इस एपिसोड में, मोमेंट्स थे, और एक परफेक्ट फर्स्ट एपिसोड को किस तरह का होना चाहिए, मेरे ख्याल से इट डज दैट, इट सर्व्स दैट पर्पस, एंड आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस ड्रामा एवरी संडे. हमने कर्जे जहां के भी बारे में बात की थी, इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रामा, बोथ आर poles apart, but our Sundays are looking exciting. तो every Sunday ये आता है ग्रीन टीवी पे शाम 8 बजे पाकिस्तानी टाइम. तो मेरे लिए तो जो मैं इसको अगर रेटिंग देना चाहूँ कोई, if I would want to give this first episode a rating, I'd give it 9. I would give it 9. Yes, 9 for me. 9 from me as well. 8 from me, because I felt like that pawn owner shop ka scene was very lengthy. It shouldn't have been that way. Then Ahmed Ali Akbar ka jo jail ka scene tha, I don't know if that policeman is going to play any role in the future,
but it was again a lengthy scene. Itna zarurat nahi tha for the first episode. So yeah, 8 for me, but I'm excited about this show. Yep, we are. All right. So I guess this brings us to the end of this podcast on Farar. Whoever would like to wrap up, Sunny or Sanat, जो भी करना चाहे. So, guys, we'll wrap up for our episode review for now, and we will all see you guys next time with another drama and another episode. Thank you. Thank you. All Bye, right, Allah guys. Hafiz. Thank you so Bye. much. Bye.